The second sovereign green bond auction of current financial year received tepid response as the Reserve Bank of India was able to sell less. Why it was able to sell less? Because traders refused to pay greenium, which signifies the premium investors are willing to pay for green bonds because of their sustainability impact. Green bonds are used to finance or refinance eligible green projects, which will result in environmental benefits. Greenium is the price benefit based on the logic that investors are willing to pay extra or accept low yield for sustainable impact. Now, a new species of loach fish, that is Chestura sonarensis. Yeah, so this is something like that. Chestura sonarensis has been found in Sonarenga, Nakama, and Chaibol caves of South Garo Hills district of Meghalaya. These species are not blind like other cave species found in these areas. Next is surrogate advertising. Surrogate advertisement is a marketing tactics that involves promoting products under a common brand name to raise awareness for products that are restricted or illegal to advertise. So, Ministry of Health asked BCCI and Sports Authority of India to prevent surrogate advertisement of tobacco और अल्कोहल बाय स्पोर्ट्स पर्सन सो ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट है क्या एक कॉमन ब्रांड नेम है ठीक है वो ब्रांड अच्छे प्रोडक्ट भी बनाती है और कुछ इलीगल प्रोडक्ट भी बनाती है तो वो जो कॉमन ब्रांड नेम है अगर वो ब्रांड प्रमोट होगा तो उसके अंदर जो इलीगल प्रोडक्ट बिकता है वो भी तो प्रमोट हो रहा है बट इनडायरेक्टली वो डायरेक्टली प्रमोट नहीं हो रहा है सो इस केस में उसको सरोगेट एडवर्टीजमेंट बोलते हैं अब सीधा आप टोबैको का एडवर्टीजमेंट देने लगोगे तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि इलीगल है बट सेम कंपनी जो टोबैको ही बना रही है सेम कंपनी दूसरे प्रोडक्ट भी बना रही है तो उस ब्रांड को ही प्रमोट करो तो दैट इज सरोगेट एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट सो इसको बोला गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन शुड नॉट यू नो डू दिस सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री एक गाइडलाइन जारी किया है बीसीसीआई को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को Now, next is India maintained its position as the eighth largest global exporter of agricultural product in 2023 as per World Trade Statistics 2023 issued by WTO. Now, next is Indian Navy ship Tabar or Tabar जो भी है participated in maritime partnership exercise between India and Russia. इंडिया सेलेक्टेड टू क्रू मेंबर दो लकी लोग हैं ये हैं शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्णन नायर both are captain in Indian Air Force and they are selected for Axom 4 mission to International Space Station. So what is Axom 4? What is Axom? This is a collaboration between ISRO, Axiom Space and NASA and it is a significant leap forward to international space cooperation. एंड एक और चीज जानो कि स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क का है दैट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन इट सो या नेक्स्ट है ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन गेन this is an NGO and this NGO was founded by United Nations and why it was founded I will tell you later. So this is an NGO that is called as Global Alliance for Improved Nutrition GAIN. A Switzerland-based NGO launched the report titled "The Case for Investment in Nutritious Food Value Chain: An Opportunity for Gender Impact." The report calls for increased funding to nutritious food value chain, in particular small and medium enterprises, which critically lack access to financing in emerging markets. The NGO was launched by United Nations to tackle the human suffering caused by malnutrition. So malnutrition के कारण जो human suffering हो रहा था उसके लिए ये United Nations ने फाउंड किया था 2002 में अभी नहीं किया है बहुत पहले किया था तो ये एक रिपोर्ट जारी किया है वो क्या रिपोर्ट का नाम है द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड वैल्यू चेन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जेंडर इम्पैक्ट सो समथिंग रिलेटेड टू जेंडर एज वेल सो ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि वी नीड टू इंक्रीज द फंडिंग टू न्यूट्रिशियस फूड वैल्यू चेन इन पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस तो इससे क्या होगा इससे आपका जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ेगा इससे न्यूट्रिशन भी इरेडिकेट होगा सो इससे मल्टीपल चीज में इफेक्ट होने वाला है इससे ओके
नेक्स्ट इज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये क्या चीज है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन आर वेपन दैट यूजेस concentrated एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक from electromagnetic or particle technology instead of kinetic energy. So we are not using kinetic energy, we are using electromagnetic energy or some particle technology. So in 2020, DRDO announced its plan to develop direct energy weapon using microwave and high energy laser. So microwave और high energy laser यूज करेगा ये DRDO। तो उसने अभी अभी काली है, उसमें एक इसको बोलते हैं किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, और एक दुर्गा करके है। सो डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे आर फ्यू ऑफ देम। सो ये दो याद रखो। Next, NIDIA recently published a report called A Strategy for Development of Seaweed Value Chain. So, seaweed value chain, seaweed क्या होता है? Seaweed are different types of marine plants and microalgae, ये plant ही है, these are not animals, and that grows in river, lake, other water bodies. They are rich in vitamins and minerals, and also they play an important role in carbon sequestration. What is carbon sequestration? Google करो। नेक्स्ट इज चाइना प्लस वन, सी प्लस वन और प्लस वन भी बोल सकते हैं इसको। व्हाट इज दिस? इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी टू अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना and diversify business into another countries, or to channel investment into manufacturing in other promising developing countries such as India, Thailand, Turkey, Vietnam and Asian countries में ये स्प्रेड करना चाहते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को। और why this is happening? China plus one. Why this is happening? This is happening because of disrupt, disruption in the business due to China's zero COVID policy, and rising labor cost in China, and growing tension between US and China. So most of the business in China is trying to move out of China, and they are trying to go to other developing Asian countries, and specifically India है, थाईलैंड, टर्की और वियतनाम का भी नाम है उसमें, बट दे वांट टू ओपन अ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। सो as per economic survey, focusing on FDI from China seems more promising for boosting India's export to US, and which is similar to how East Asian economies did in the past. So जो भी एफडीआई हम लोग को चाइना से मिल रहा है, उसका यूज करके वो लोग इंडिया इंडिया से एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे यूएस की तरफ। मतलब पैसा ले चाइना से और एक्सपोर्ट इंडिया को यूएस को कर रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके। ओके, सो ये इकोनॉमिक सर्वे का एक सजेशन है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज रिलेटेड टू चाइना प्लस वन, सो दैट इज व्हाई इट इज in this PPT. Now, next is the cabinet approved the eight national high-speed road corridor project to improve logistic efficiency and reduced congestion and enhance connectivity across the country. कंजेशन को कम करेगा, लॉजिस्टिक को एफिशिएंट बनाएगा और कनेक्टिविटी को दुरुस्त करेगा। दिस इंक्लूड नासिक पाटा खेड़ कॉरिडोर, okay, near Pune, and we have Agra Gwalior National High Speed Corridor. In that, we have Kanpur Ring Road, we have Kharagpur Moregram National High Speed Corridor, we have Ayodhya Ring Road. So this project will be implemented using various public-private partnership mode, and it includes BOT, that is built, operate, and transfer, and HAM, that is hybrid annuity mode, and EPC, that is engineering, procurement, and construction mode. Okay. Next is Reserve Bank of India revises NPA's provisions norm for cooperative bank. ये cooperative bank के लिए revise किया है। जो किया है to ensure uniformity in the treatment of bad and doubtful debt reserve, that is BDDR, bad and doubtful debt reserve. All provisions under the income recognition, asset classification, and provision norms must be charged as a expense to profit and loss account. ये economic का part है। After accounting all, after accounting for all provisions, cooperative bank may make appropriations of net profit to BDDR. Okay, so this is the thing. Next is the study titled Conscious Pattern. Okay, was conducted by the Advertising Standard Council of India.
So this is organization, and it has produced a study with this title, Conscious Pattern, in collaboration with Bangalore-based user interface design agency Parallel SQ, and NASCOM is also involved in it. And it is to promote the ethical standard in the app design. Okay, so they have conducted this study to promote the ethical standard in the app design. So what they found is health tech apps had the highest number of deceptive practices that manipulated user to make unintended purchases, followed by travel booking apps and fintech apps. So सबसे अधिक जो डिसीव करने की चीजें हो रही हैं वो हेल्थ टेक ऐप कर रहा है, उसके बाद ट्रैवल बुकिंग ऐप कर रहा है, फिर लास्ट में कर रहा है फिनटेक एप्स. So what is conscious pattern? Conscious pattern refers to features in an app user interface that are clear and honest, making it easy for user to understand what they are doing and avoid being tricked. The term contrasts with the dark pattern. So what is dark pattern? So dark pattern is pattern which are disruptive, which uses deceptive practices that can trick or coerce user into actions that might not intend. Means आप कर कुछ और रहे हो, अंदर में हो कुछ और रहा है. So so I would say like डार्क पैटर्न सबसे अधिक किसमें है? हेल्थ टेक एप्स में है, उसके बाद फिर ट्रैवल बुकिंग एप्स में है, फिर फिनटेक एप्स में है. Okay, that's it for today, and we will meet tomorrow.